वेलकम बैक टू रघु सर मैथ्स एकेडमी। सो देखिए आज क्लास 10 बच्चों के लिए मैट्रिक्स का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, इसको डेफिनेशन कराएंगे, पीओआई के कराएंगे। सो जो जो कंसेप्ट है उसको भी समझाऊंगा, ठीक है। देखिए सो मैट्रिक्स क्या होता है सर? इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम। अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम, लाइक दिस। सपोज 1 2 3 4 5 6, ये होता है मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स द एलिमेंट शुड बी रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट and these are what elements. 1 2 3 4 5 6 is a element. So arrangements of element in a row and column is called what? Matrix. These are horizontal line is called what? Rows, and the vertical line is called what? Columns. Okay, so next is order of the matrix. Do you know what is order? So number of row and columns are called order. So here how many rows is here? 2 rows. How many columns? 3 rows, 3 columns. So 2 by 3 is the order of the matrix, right? So how many elements is here? Sir, 2 into 3, 6 elements. 1 2 3 4 5 6. ये होता है concept, ठीक है। Next, so order of the matrix, you know, can you say? Suppose A is a matrix. Name of the matrix should be capital letter, and their elements are written either 1 2 3 4 5 6. Okay, so what is the order of the matrix? Order means first of all you write down row. How many rows is here? Sir, 1 row, 2 row, 3 rows. How many columns are there? 1 column, 2 column. So order is what? 3 by 2. 3 into 2 नहीं, 3 by 2 होता है order. Okay, next, element of the matrix. Suppose B is a matrix. B is a matrix. It is given 5 0 2 3. These are the elements. These are elements of the matrix. So how many elements are here? So here 2 rows and 2 columns. So 4 elements. 1 2 3 4 elements. Concept clear हुआ ना? Next question चलिए. Types of matrix. There are how many types of matrix? See, one by one I will discuss. So first is row matrix. Matrix having only one row. कैसे? सर देखिए, A is a matrix. See, A is a matrix having only one row. Whatever the number of column, but row is one. So it is called what? Row matrix. Having only one row. Similarly, column matrix क्या होता है? Having only one column. 1 5. So देखिए, one column, whatever the number of rows, but column number is 1. So it is what? Column matrix. Then square matrix. Square matrix is number of row equal to number of column होता है। देखिए, suppose P is a matrix, that is A B C D. Okay, how many rows? Sir, 2 rows, 2 columns. So 2 by 2. It is a square matrix. 3 by 3, 4 by 4. So square matrix. Number of row equal to number of column होता है, right? Next, rectangular matrix क्या होता है? Matrix row and columns are not equal. Number of row is not equal to number of columns. Like see, suppose A is a matrix. It is given 1 2 3 4 0 7. Here 2 rows and 3 columns. So number of row is not equal to number of columns. So it is a rectangular matrix. ये होता है definition, छोटा छोटा definition, बस ठीक है। Next is null matrix or zero matrix. If null matrix, suppose B is a matrix, null matrix, all the entries are zeros, all the elements are 0 0 0. So it is called what? Null matrix. Diagonal matrix सर क्या होता है? देखिए, diagonal matrix. Listen. Suppose, just giving an example. Suppose B is a matrix 2 0 0. It is a square matrix. Diagonal matrix is a square matrix whose leading diagonals, except leading diagonals, other entries are 0. This is called leading of diagonal. Except the leading diagonals, other entries are zeros, other elements are zeros. Is called what? Diagonal matrix होता है. Next is unit matrix. A diagonal matrix said to be unit matrix if all the top diagonals, leading diagonals, entries are 1 1 1 type. Like
आइडेंट मैट्रिक्स सपोज I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। ये देखिए एक्सेप्ट लीडिंग द अदर एंट्रीज आर 0 एंड ऑल एंट्रीज आर 1 1 1, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंट मैट्रिक्स। याद रखो डेफिनेशन सबको। नेक्स्ट ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है देखिए, सपोज A इज ए मैट्रिक्स दैट इज गिवन 1 2 3 4 0 7, इसका ट्रांसपोज A T और यू कैन राइट A डैश ऐसे लिख सकते हैं। ट्रांसपोज मींस रो वुड बी कॉलम, कॉलम वुड बी सर रो। सर कैसे करें, फर्स्ट रो वुड बी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो वुड बी सेकंड कॉलम, ये होता है ट्रांसपोज। ओके अगेन अगर ट्रांसपोज करें A ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज कर दे खुद A आ जाएंगे, सो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएंगे A। ट्रांसपोज मींस रो विल बी कॉलम, कॉलम विल बी रो, ठीक है। नेक्स्ट equality of the matrix. So two matrices said to be equal if they have same order. Like suppose A is a matrix, it is given A B C D. B is another matrix that is also same order 2 3 5 7. So if A equal to B, that means their corresponding elements are equal. Sir, A equal to 2, C equal to 5, okay, B equal to 3 and D equal to 7. ये होता है सर इक्वालिटी। When two matrices are equal, then their corresponding elements are equal होता है, ठीक है। Next, addition of the matrix, very important. So when you add two matrices, याद रखो, so they have two matrices can be added if they have same order. Order अगर difference होगा we can try. Suppose देखिए A is a matrix that is given 1 2 0 7. B is another matrix that is given 2 3 8 1. If we add A plus B, we can add because its order is 2 by 2, its order also 2 by 2, same order, then we can add, otherwise you can't add. So किस ऐड करेंगे सर, corresponding element. सर first 1 plus 2 corresponding element 3, 2 plus 3 first row के साथ ना 2 plus 3 that equal to 5, second row 0 plus 8 8, 7 plus 1 8. ये होता है मैट्रिक्स एडिशन, सेम ऑर्डर। अगर ऑर्डर डिफरेंट हो जाए वी कैन ऐड। सबट्रैक्शन सिमिलरली वी कैन सबट्रैक्ट टू मैट्रिक्स, कैसे करेंगे, सेम दे हैव सेम ऑर्डर होना चाहिए। कैसे करेंगे सर देखिए, गिव एन एग्जांपल। सपोज A is a matrix that is given 8 3 5 0 3 7. B is another matrix, it is given 1 2 0 3 1 2. So when you subtract A minus B करेंगे तो corresponding element subtract करेंगे। So 8 minus 1 7, 3 minus 2 1, 5 minus 0 5. Similarly 0 minus 3 minus 3, 3 minus 1 2, 7 minus 2 5. ये होता है subtraction of the two matrix, ठीक है। addition subtraction clear। so next क्या होता है देखिए, additive identity। जैसे you know, so any number what you add with any number, so result क्या होता है, additive identity, कुछ नहीं चेंज होता है, as it is same रहते हैं। जैसे 2 के साथ क्या ऐड करेंगे, so doesn't value changes, so 2 plus 0, so 0 is equal to what, additive identity। Similarly here matrix, any matrix added with the null matrix, the matrix remains unchanged, so null matrix is called what, additive identity। additive identity, suppose A is a matrix, just a minute, suppose A is a matrix, it is given 1 2 3 4। इसमें कौन सा मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स रिमेन्स अनचेंज। सर नॉन मैट्रिक्स देखिए, नॉन मैट्रिक्स क्या होता है, 0 0 0 0 ऐड कर दीजिए, 1 plus 0 कॉरेस्पॉन्डिंग एडिशन करो, ये होता है सपोज बी मैट्रिक्स। सो 1 plus 0 1, 2 plus 0 2, 3 4, मैट्रिक्स रिमेन्स अनचेंज, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एडिटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स सर क्या होता है,
देखिए एडिटिव इनवर्स, जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है सर, -2, क्या ऐड करेंगे रिजल्ट वुड बी 0, जस्ट ऑपोजिट साइड। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है सर, -3। सिमिलरली सपोज A is a matrix is given, that is given 2 3 5 7, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा सर, एडिटिव इनवर्स जस्ट ऑपोजिट साइड करो, -2 -3 -5 -7, ये होता है एडिटिव जस्ट ऑपोजिट साइड। इफ यू ऐड दिस टू इट विल बी नॉल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। सॉल्विंग द मैट्रिक्स इक्वेशन अगर देखें, सपोज A is a matrix 2 3 5 7, sir A plus x another matrix, it is given 5 2 3 7, then how can you find the value of x, सॉल्व करेंगे तो A का क्या लिख सकते हैं, 2 3 5 7 plus x, name of the matrix should be capital letter, 5 2 3 7। अगर आपको x चाहिए, this will be transferred to this side, so it will be what, minus, so 5 2 3 7 minus ये मैट्रिक्स सर 2 3 5, जैसे इक्वेशन करते हैं तो अभी करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स यू कैन सबट्रैक्ट, ओके सबट्रैक्ट कर दीजिए सर, 5 minus 2 क्या होता है सर, 3, 2 minus 3 -1, 3 minus 5 -2, 7 minus 7 0, ये होता है सॉल्विंग द मैट्रिक्स x। सॉल्व अननोन मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये होता है सर कॉन्सेप्ट, ओके। सो आज के लिए ये इतना ही। बाकी क्लास जो कमिंग क्लास में मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद हम पीओआई के लेकर आएंगे, तो इस क्लास को जरा फॉलो कीजिए, so don't miss the class, so I will explain one by one very clear, okay। so coming class में मैं जो बाकी जो लेकर आएंगे, अगर ये आपको अच्छा लगता है दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।